Welcome to English YouTube channel. This is Shuhab Pirzada. Today we are going to talk about very important topic, and that is written over here, the clauses. Actually, clauses, they are the parts of sentences. They form the basic parts of sentences. And in a sentence, because clause forms part of big or large sentence, and in a sentence we can see different clauses used. They have got different functions in the clause, and they are joined by different conjunctions. Those clauses which are joined by different conjunctions, we call them subordinate clauses, because they are joined by subordinate conjunctions. Now we have to look at the clauses. अब हमें ये देखना होगा कि वाकई सेंटेंस में जो क्लास है, क्लास हैज़ गॉट इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसमें अपना सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट भी होता है. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? यू आर वेरी फेमिलियर अबाउट दैट. मीन्स डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला, जो भी काम करता है. दिस इज डूअर ऑफ एन एक्शन. इफ आई से बर्ड फ्लाइज इन द एयर, राइट, he catches a ball. The cat catches a mouse. The cat catches a mouse. Cat subject. Catches a mouse. That's predicate. Predicate is that part of the sentence that gives us information about the activity of the subject. जैसे कि birds sing. ठीक है, bird subject, sing ये predicate. Because it gives us much more information about the activity of the subject. So we say subject and predicate. Here, a clause is a sentence that forms part of a large sentence. जो बड़ा सेंटेंस होता है उसमें वो पार्ट बनाता है, उसका पार्ट बनता है, यानी खुद उसका कंपोनेंट बन जाता है, हिस्सा बन जाता है. ठीक है. एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इनको आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है. द बॉय वेंट होम व्हेन द स्कूल वाज ओवर. अब इसमें देखें कितने क्लासेस हैं. क्लासेस हैं या नहीं है? हैं भाई. देखें, अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा तो क्लास भी होगा, क्योंकि क्लास में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन लाजमी है. अगर उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो क्लास नहीं होगा, वो फ्रेज होगा. ठीक है. अब देखें, द बॉय सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, तो ये क्लास है. वाकई ये क्लास ही है. व्हेन द स्कूल वाज ओवर, अगेन सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन. देखिए, स्कूल वाज, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये भी कॉम्बिनेशन, यानी इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है. लेकिन एक ऐसा लफ्ज है, वी कॉल कंजक्शन, दैट कंबाइंस टू पार्ट्स टुगेदर. अगर हम यहां से व्हेन निकाल दें, देखिए मैं अभी पढ़ रहा हूं उसको. द बॉय वेंट होम द स्कूल वाज ओवर, तो क्या इसमें सिस्टेमेटिकली कोई चीज बनती है, आपस में कॉम्बिनेशन होती है, कोई सेंस निकलता है? नहीं निकलता जब तक हम कंजक्शन इसमें नहीं मिलाते. और वाई वेन. ठीक है. अब देखें, द बॉय वेंट होम व्हेन द स्कूल वाज ओवर. इट मीन्स, अगर मैं ये खाली कहूं, सिर्फ यही कहूं, व्हेन आई वाज देयर, व्हेन ही केम टू मी, व्हेन आई वाज ड्राइविंग, व्हेन आई सॉ प्लेन, When my friend met an accident, और आगे कुछ भी ना बोलूं तो आप पूछेंगे सर आगे क्या होगा, क्या हुआ? ये सेंटेंस कंप्लीट तो नहीं है. इट मीन्स दीज सेंटेंसेस, दीज क्लासेस डू नॉट मेक एनी सेंस देमसेल्व्स. दे आर नॉट कन्वेइंग एनी मीनिंगफुल सिचुएशन एट ऑल. हकीकत में द बॉय वेंट होम, अगर हम ये कहें, वाकई ये जो सेंटेंस है इसमें देखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, वर्ब है. बिल्कुल, इसका ये हकीकत में कंप्लीट सेंटेंस है, और ये क्लास है. सेंटेंस है, ये क्लास है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लार्ज सेंटेंस है, तो हम क्लास भी कह सकते हैं. लेकिन यहां पर अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ मैं यही कह दूं बॉय वेंट होम,
बात तो पूरी होगी ना, लड़का कहाँ गया, घर पे गया, सही है, सेंटेंस तो हो गया। लेकिन अगर यहाँ से मैं कंजक्शन मिलाता हूँ तो आगे सेंस निकलता है इसका। तो ये सेंटेंस जो है इसमें द बॉय वेंट होम, हकीकत में ये जो सेंटेंस है ये मेन क्लास है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड सम मनी। अब इसमें देखें, ही टोल्ड मी दैट, देखें ही टोल्ड मी पूरा सेंटेंस, यहां तक क्लास है। दैट ही वांटेड सम मनी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लास है। इसको पूरा करने के लिए मेन क्लास की जरूरत होगी और वह है ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड सम मनी, राइट। माय फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वाज इन डेंजर। अगेन देखें, माय फ्रेंड हेल्प मी पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट क्लास है, राइट। इट डज नॉट नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर क्लास because it can show its sense completely. But when I was in danger, अगर सिर्फ मैं ये कहूँ कि when I was in danger और आगे कुछ भी ना बोलूँ तो आप कहेंगे सर आगे क्या हुआ। It means it can't stand by itself, does not give complete sense unless we add another main clause. It needs to be added to the main clause by joining with conjunction, and that's when. My friend helped me when I was in danger. It means ये मेन क्लास है और ये सबऑर्डिनेट क्लास है। इसको हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं और इसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, बात एक ही है। ठीक है, ये तो खुद मुख्तियार है और ये जो क्लास है which cannot stand by themselves alone, they don't give any sense unless joined by conjunction, we call them dependent clauses. Dependent clause, or we can call them that these clauses always depend upon other clauses for their meaning, means subordinate clauses. ठीक है, okay, now explanation इसकी। We can see that above sentences have two parts, बाकी two parts है, एक पार्ट ये दूसरा ये पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट ये दूसरा ये पार्ट है, एक पार्ट ये दूसरा ये पार्ट है। Above sentences have two parts. When the school was over, देखिए ये सेंटेंस क्लास है। When the school was over, that he wanted some money when I was in danger. So do you think these sentence clauses are complete clauses? Are they independent clauses? Are they principal or main clauses? No, never at all, because they can't convey their meaning completely. They don't show any sense properly unless they are added to another clause that's called main clause with the help of conjunction. So we call them, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि भाई ये सबऑर्डिनेट क्लास है, डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनको हेल्प चाहिए, सहारा चाहिए किसी मेन क्लास का मीनिंग को दिखाने के लिए, वरना ये कमजोर है, ठीक है। These clauses do not stand on their own, they do not sound complete and depend upon other parts of sentence. बिल्कुल सही हकीकत है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। So they are dependent clauses, पहले ही बता दिया डिपेंडेंट क्लासेस हैं। और whereas the clauses that can stand independently are called main or principal clauses. वाकई जो clauses जो के that can stand, that can give proper sense properly without depending on any other part of the sentence, they are called independent or main clauses or principal clauses, right? अब इसमें देखें और भी एग्जाम्पल है, देखिए they came here after the party was over. They came here after the party was over. अब देखें इसमें अगर सिर्फ मैं ये कहूं कि after the party was over, कुछ भी ना बोलूँगे तो आप पूछेंगे सर पार्टी जब खत्म हुई तो इसके बाद क्या हुआ, और मैं कुछ भी ना बोलूँ तो क्या ये सेंस कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं है। अगर ये मैं कहूँ they came here after the party was over, अब कंप्लीट है। इसका मतलब है ये मेन क्लास हो गया। अच्छा, ये देखें we believe in democracy, वाकई
जमहूरियत में हम एतमाद करते हैं। वो कहते हैं ना, लूली लगड़ी जमहूरियत फिर भी डिक्टेटरशिप से अच्छी है। तो वी बिलीव इन डेमोक्रेसी दो इट हैज़ मेनी ड्रॉबैक्स, चाहे उसमें कितनी भी खामियां क्यों ना हो, फिर भी वो उसमें हम बिलीव करते हैं। तो देखें, अगर सिर्फ ये मैं बोलूं दो इट हैज़ मेनी ड्रॉबैक्स, आगे कुछ भी ना बोलूं, नो सेंस। अगर कहूं वी बिलीव इन डेमोक्रेसी दो इट हैज़ मेनी ड्रॉबैक्स, नाउ कंप्लीट। It means dependent and independent clauses are joined together to form a complete sentence, and clauses are parts of longer or larger sentences. And we need to learn these clauses accurately. If you want to speak language accurately, with proper accuracy, then we need to learn these clauses separately. Their functions as well, and they are joining different parts of the sentence. And also think about those conjunctions which are mostly used to connect the subordinate and main clauses together. Right. अब देखें, everything was quiet before the bomb exploded. यानी बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था? Everything was okay. Everything was quiet before the bomb exploded. This is subordinate clause and this is main clause. Now have a look at the sentences. We rested when the evening came. We rested अगर मैं कहूँ तो हकीकत में ये पूरा सेंटेंस है, पूरा क्लास है, और ये इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि मुकम्मल मीनिंग दे सकता है. It can stand by itself by giving complete sense or meaning. When evening came, अगर सिर्फ मैं ये बोलूँ when evening came, when morning came, when he came, when he borrowed some money, when I saw him coming, अगर ये मैं कहूँ, ये सेंटेंस कहूँ, do they make complete sentence sense? Never at all. They don't make. We need to join them to other independent clauses so that they can show complete meaning. अगर ये मैं बोलूँ we rested when the evening came, quite right, बिल्कुल सही है. अब सही है. दूसरा, we admire a man who is always generous. We admire a man who is always generous. इसमें भी दो पार्ट्स हैं, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास. We admire a man, बिल्कुल सही है, ये कंप्लीट पार्ट है, कंप्लीट क्लास है, ठीक है. और ये इंडिपेंडेंट क्लास है. Who is always generous, जो हमेशा सखी होता है. Who is always generous, this is dependent. So they need to be joined together by who? Actually working as a relative pronoun here. Who is working as relative pronoun? We admire man who is always generous. ये relative pronoun क्यों हुआ? Because it actually represents man, that's noun. Physics is a subject which is to be taught well. Physics is a subject, वो तो complete sentence है, which is to be taught well, ये dependent clause है. दोनों को ज्वाइन करेंगे क्या होगा? Physics is a subject which is to be taught well. ठीक है. अब there are three kinds of subordinate clauses. अब इसमें types clauses की कौन कौन सी है, उसमें थोड़ा सा we want to go into certain depth of the clauses to know about types of clauses so that we can identify them, we can use them in proper time, and also be able to add accuracy to our language, to know about the conditions, the circumstances, when to use them and when not to use them, right? There are three kinds of subordinate clauses, यानी वो clauses जो कि dependent clauses है, उनके three types हैं. अब देखें, adverb clause, पहले आ रहा है adverb clause. It is a group of words which contains subject and predicate of its own and does the work of an adverb. वाकई वो adverb clause है जो कि adverb का काम ही करता है. इसमें अपना खुद जो है, यानी subject verb का agreement होता है, यानी इसमें subject predicate अपना ही होता है और and does the work of an adverb. ठीक है. Examine the following sentences. ये देखें sentence. The child cried when it saw a dog.
The child cried when it saw a dog. When did the child cry? The child cried when it saw a dog. It's adverb clause. Because why? This word shows it's time related. Adverb clause of time. When did child cry? The child cried when it saw dog. Adverb clause, right? This one, my parents were happy because I stood first in the exam. वाकई वालिदैन को खुशी होती है जब बच्चा कोई पहले नंबर पे आता है एग्जाम में, वो नेचुरल है। लेकिन यहां पर देखें, माई पेरेंट्स वर हैप्पी बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम। वाई वर माई पेरेंट्स हैप्पी? वाई, वाई का सवाल एडवर्ब में आता है। क्यों? बिकॉज I stood first in the exam. So this is adverb clause. Next is the crops will fail unless it rains this week. अगर इस हफ्ते बारिश ना पड़ी तो क्रॉप्स का हशर खराब होगा। ठीक है, अगर इसको मैं इस तरह बोलूं, if it doesn't rain this week the crops will suffer. Same thing, क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। ठीक है, द पेंटिंग वॉज सो ब्यूटिफुल दैट एवरीवन एडमायर्ड इट। सो ब्यूटिफुल, एवरीवन एडमायर्ड इट। व्हाई समबडी एडमायर्ड? व्हाई? बिकॉज दे वर इम्प्रेस्ड विद द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, सो दे एडमायर्ड। दिस इज एडवर्ब क्लॉज। कम टू नेक्स्ट, although he is very honest, he is not boastful. ईमानदार है लेकिन वो अपने लिए कुछ अल्फाज ऐसे नहीं बोलता है कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, अपनी खुद तारीफ खुद नहीं करता। ठीक है, although he is very honest, he is not boastful. ठीक है, यानी इसकी अब जब हम although इस्तेमाल करते हैं तो कोई ना कोई बात उसके उलट में होती है, अपोजिट में। Even though I started earlier, I got later. Even though he was running, he missed the train. Although he started running, he missed the train. यानी ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं though, although, even though, तब इस्तेमाल करते हैं जब इससे आगे जाके हमें कुछ अपोजिशन की बात करनी पड़ती है। ठीक है, so this is called adverb okay class. Now coming to next type of the class, that's adjective class. Let us learn something about it in detail, what we call that's the adjective class. What can be the examples which are there to satisfy you that you can really understand that it can be or it is really an adjective class, right? An adjective class is a group of words which contains a subject and predicate of its own, does the work of an adjective. Subject and predicate of its own, every clause contains that. The clause, whichever is independent clause or dependent clause, certainly contains or consists of subject and predicate of its own. This is called a clause. Examine the following sentences. Go through these sentences and try to understand properly. The watch which has a golden chain is mine. The watch which has a golden chain is mine. Look at this one. The watch which has a golden chain is mine. ये किस किस्म का जो है क्लास हो गया? Adjective class, because it actually tells us about a noun, and noun is watch. Any word that describes a noun is function of an adjective. So that's the adjective clause. The watch which has a golden chain is mine. The group of words which describes a watch does the work of an adjective. वाकई क्या फंक्शन होता है एडजेक्टिव का? To describe noun or pronoun, to add to the quality of noun or pronoun, we call it adjective. But since it contains a subject and predicate of its own, so it is called what? An adjective clause. इसमें subject predicate अपना है और ये दरअसल रिप्रेजेंट कर रहा है वॉच को,
ऐड कर रहा है वाज की क्वालिटी में, तो दिस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लास. नेक्स्ट वन, अदर एग्जांपल्स. दिस इज द बेगर हु मेट मी yesterday. This is the beggar who met me yesterday. This is the beggar who met me yesterday. Actually, who यहाँ पर तो relative pronoun है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? beggar को. This is the beggar who met me yesterday. Adding to the meaning of noun. So that's the adjective clause. Where is the boy whom you punished? Where is the boy whom you punished? वो लड़का कहाँ है जिसको आपने सजा दी, वो कहाँ है? देखें यहाँ पर, ये whom है, ये boy noun है, इसको रेफर कर रहा है, boy को. Means adding or representing noun or pronoun is called adjective. So this is entire sentence stands in the form of adjective clause. Right? The village where I live. The village where I lived is over there. यानी वो गांव जहां पर मैं रहता था वो कहाँ है? वहां पर है. ठीक है. The village where I lived. अब where? ठीक है. अलग where तो प्लेस को शो कर रहा है, लेकिन यहां पर ऐड कर रहा है to the meaning of noun. It adds to the meaning of noun, representing, adding to the meaning of noun. So that's called adjective. Means as it has got its own subject and predicate, so this is called adjective clause. देखिए, the time when the school opens has been changed. The time when the school opens. अब when किसको क्वालिफाई कर रहा है? टाइम को. The time when the school opens, it means adding to the meaning of noun. Does the work of an adjective. So this is called adjective clause. It has got its own subject and predicate. Next one, I have lost the book which you lent me. This is lent. Lent क्या मकसद है? Lend करना, किसी को कोई चीज उधार देना और उधार पे लेना, बारो करना, ये वर्ड्स है. ठीक है. I have lost the book which you lent me. अच्छा, ये नाउन है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है बुक को. इसका फंक्शन यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव वाला. तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लास. Yes, coming back to the noun class now, we want to understand in the real context what noun class is, how it can be formed, and how to identify noun class. What are the most important rules and regulations for the formation of noun class and how to identify that? Look at the examples. Yes. The noun class is a group of words which contains a subject and predicate of its own and does the work of noun. Certainly. Every clause has got subject and predicate of its own, but every clause works differently. Example, I hope that I will get a prize. I hope that I will get a prize. This is a noun clause. I hope that. I hope what? That I will get a prize. Means it can be object of the verb. So that's a noun clause. The group of words that I will get a prize is a complete clause because it contains a subject and predicate of its own. That I will get a prize. I, subject, predicate. The clause is object of the word hope, so it is a noun clause. मैंने आपको पहले बता दिया. I hope, ये hope है, spelling भी थोड़ा सा एक मिनट. I hope that I will get a prize. I said hope what? Hope I will get a prize. Means ये हकीकत में verb है, ये सारा इसका ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है. ठीक है. It means this is noun clause. Yes, the clause is object of the word hope, so it is a noun clause. Other examples are: everybody admitted that he is a brave man. Admitted what? That is a brave man. Admitted.
So verb, this is object of verb admitted. This is noun class. एग्जाम्पल देखें, सिंपल में देखें, सिंपलीफाई करके बिल्कुल सिंपलीफाई कर रहा हूँ इसको आप सब्जेक्ट कहेंगे, है ये सब्जेक्ट, डेफिनेटली दैट्स अ सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन एंड शोज द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग, वर्ब, व्हाट, लेटर। अगर हम कहें ये ऑब्जेक्ट है, क्यों ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट क्यों है? हकीकत में ये राइट्स का ऑब्जेक्ट है। मैं राइट करता हूं, लिखता हूं, क्या लिखता हूं? जो लिखता हूं वो ऑब्जेक्ट है। किसका? राइट का। अब इसमें देखें, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। अब दूसरी बात हो गई, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, यानी जो कि आप कह रहे हैं उसमें तो कोई मकसद ही नहीं है, फजूल बात है, वो तो बिल्कुल फजूल है। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, ये हकीकत में इन जो है प्रेपोजिशन है। तो कभी कभी ये होता है कि नाउन क्लास जो होता है, ठीक है ना, उसमें वो ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का, यहां पर इन है, ये सारा इसका ऑब्जेक्ट है, व्हाट यू से। सो दिस इज नाउन क्लास। कमिंग टू नेक्स्ट, द नाउन क्लास कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। दूसरी बात आ गई है कि वो वर्ब का सब्जेक्ट भी बन सकता है नाउन क्लास। ये भी रूल्स हैं इसमें, रूल्स, सब रूल्स। एग्जाम्पल, व्हाट यू टोल्ड मी वाज अ लाई। व्हाट यू टोल्ड मी, व्हाट यू टोल्ड मी, ये सब्जेक्ट है इसका। व्हाट यू टोल्ड मी, व्हाट यू टोल्ड मी वाज अ लाई, ये सब्जेक्ट है, वाज अ लाई का सब्जेक्ट है। दिस इज नाउन क्लास। हाउ ही कुड गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी was the question. How he could get out of the difficulty, out of the difficulty. इसमें देखें, है प्रेपोजिशन, ऑफ है, यानी मुश्किल से किस तरह वो निकला है, किस तरह निकल सकता है, वही सवाल था हकीकत में। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, किसका? प्रेपोजिशन का। कॉल्ड नाउन, नाउन क्लास। नाउन क्लास कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। सीधी बात है बिल्कुल। ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, कुछ इनट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं which actually take effect of the work. If the action of the verb does not stop the door of that action but passes him from him to something else in the sentence, this is called transitive verb. अगर मैं कहूं I saw, मैंने देखा, ये बात जरूर ज़हन में आएगी। क्या देखा सर आपने, क्या देखा? ओ I saw, क्या देखा? अगर मैं कहूं द मून, ठीक है, इसमें क्या हो गया? अब ये जो सा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और जो राइट है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ये लिख रहा है ही इज राइटिंग, इन ट्रांजिटिव। ही इज राइटिंग अ लेटर, ट्रांजिटिव, ठीक है। आई एम वॉचिंग, इन ट्रांजिटिव। आई एम वॉचिंग एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ट्रांजिटिव। यानी जिस वर्ब को हकीकत में पूरा करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़े, उस पर असर पड़े काम का, तो वो वर्ब जो है ट्रांजिटिव कहलाता है, फ़ैल मुतअद्दी, राइट। The noun class can be object of transitive verb. I earn whatever I can. I earn ये वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? वॉट एवर आई कैन, जो भी हो सकता है वो मैं अर्न करता हूं, कमा रहा हूं, काम कर रहा हूं। इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब,
वर्ब का कम्प्लीमेंट यानी जो इसमें इजाफा करता है, प्लस पॉइंट इसमें ऐड करता है, एडिशन करता है. दिस इज वेयर आई एम लिविंग, दिस इज वेयर आई एम लिविंग, इजाफा करता है इसमें. दिस इज वेयर आई एम लिविंग, नाउन क्लास. द डिफिकल्टी इज दैट आई हैव लॉस्ट माई पेपर, आई हैव लॉस्ट माई पेपर. अब ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, जार है. द डिफिकल्टी इज दैट आई हैव लॉस्ट माई पेपर. ये पूरा जो ये जो सेंटेंस है वो हकीकत में क्या है, नाउन. Still learning about the noun class. Noun class can be the object of preposition. Look at, find out that preposition here. This preposition. He is fond of singing. We can say he is fond of playing, fond of swimming, right? So this is gerund, and this is noun because it is object of preposition. So this is noun class. Pay attention to what I say. Pay attention to what I say. To what I say, actually this is object of what? Preposition. Now here we have got some exercises, and you are to carefully select or point out different types of clauses which are in mixed position. They are mixed here. You are to pick out them and try to keep their names, find out with their names what kind of clause it can be. Just like this one. He said that he met your friend. He said that, what he said? That he met your friend. It means this is object. He said that he met your friend. So this is noun class. He said that. Again, the hand that rocks a cradle rules the world. वाकई ये हकीकत है. The hand that rocks a cradle. It means that word is going to add to the meaning of noun. So it is doing of work of an adjective. This is an adjective class. Third one, where are the friends whom I helped? Where are the friends whom I helped? Actually, whom is here pronoun, but this one is going to add or pointing toward friends, and that's a noun. So this is adjective class. The word that adds to the meaning of noun is called adjective. So this is adjective class. I think that he will die. Think what? Think that he will die. Object of word. Think he will die. Noun class. I want to find out the man who did this. Who, again relative pronoun, pointing towards man. This is noun. So that's adjective class. And have you heard that Tom has won the prize? Have you heard what? Have you heard that Tom has won the prize? Have you heard that Tom has won the prize? Again, coming as object of the verb. Have you heard that? This is a noun class. I know the place which you mentioned. Which place? Place is noun, which is pointing towards place, representing the place, doing the work of an adjective. So this is what? Adjective class. My teacher hopes that you will pass. What he hopes? Hopes that you will pass. Hopes that you will pass means coming as object. So this is noun class. I will wait here until next train. Wait here until, related with time. Time related. So this is adverb class. He ate when he was hungry. He ate when he was hungry. Again related with time. So this is adverb class. So this exercise was all about the clauses, their kinds, and the skill, the technique that we use to find out, pick out different types of clauses. These are actually fundamental parts of language, basic parts of language, and they are divided into two main categories: principal clause or main clause, and subordinate clause or dependent clause. We are to find out them. If you want to speak language with accuracy and appropriacy, we need to learn them in detail. So thanks for watching.
subscribe my channel, and see you soon in the next video. Thanks a lot.